If you want, you can say about the ticks as well. There is no problem. So thank you, Shreyas, एक lovely introduction देने के लिए. So today what we will do, we will start with the analysis of Nifty and Bank Nifty, and then we will go towards the top 10 stocks of the Nifty basically. And we will go in depth basically, and we will check the trend analysis of the top 10 heavyweight stocks of the Nifty, so that whenever we will, whatever the outcome we will come when we will do the analysis of Nifty, if that analysis is supporting our top 10 stocks as well or not. So it will be very fun, and we will do it both in Hindi and English, so do not worry about that. So let's get started with the Nifty part. So to check the basically Nifty, I have used certain EMS, basically the moving averages, so that moving averages will help us to understand what exactly the trend of the Nifty is. The trend structure I have already shown in onto the charts. You will be able to understand the structure. I will explain that as well, and we will then do the analysis of the momentum, current momentum, what it is showing. Today I will go one step ahead as well, and I will show you some, if possible, then the derivatives as well. So that will be totally upon, depends upon the time and the interactions of yours. If you want, only then I will give you the derivative analysis. If there is no comments, then we will go only towards the plain technical analysis. Okay, so let's get started. So currently what we use different types of moving averages to understand the trend, and I have a particular method to use it. So this red line is a 200-day SMA, simple moving average. This green line, which is 200-day EMA, which is exponential moving averages. And there are different moving averages. We have done a color coding. So the orange one is 50-day EMS. The blue one is 100-day EMA. The red one and the brown one is, the brown is 10 EMA. The red one is 20 EMA. So all the major moving averages I have used, and whenever the prices are within these averages, the trend is right now into a confusion state. This confusion state is also known as a sideways trend, range bound trend. So, and when we are using in context of EMS, this is a confused state wherein even the price of Nifty doesn't know where to go. So that is the reason it is going within this band only. So आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं निफ्टी का एनालिसिस.
जो ये रेड लाइन है ये है 200 डे SMA। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। फिर जो ग्रीन लाइन है ये वाला जो है ये आपका 200 डे EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज। फिर आपका जो रेड लाइन है वो है आपका 20 डे EMA। फिर 10 डे EMA ब्राउन वाला जो है। फिर जो आपका ब्लू वाला जो है वो है आपका 100 डे EMA। और लास्ट में जो 50 वाला है जो ऑरेंज कलर में मैंने बताया हुआ है वो है 50 डे EMS। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम 200 डे SMA और 50 डे EMA इनके बीच में ही काम कर रहे हैं। और एकदम शॉर्टर ट्रेंड देखेंगे तो हम लोग 200 डे EMA जो ग्रीन कलर है और जो 10 डे और 20 डे EMS है इसके बीच में काम कर रहे हैं। तो एकदम ही नैरो रेंज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब ट्रेंड चेक कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ट्रेंड जो है साइडवेज है। आज एक स्टेप फर्दर जाके हम लोग चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो जब स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन बनाई हुई है जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन के कन्वर्जेंस यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पे हमने देखा है कि मैंने क्या किया है इस लो को और इस लो को खाली कनेक्ट किया और बाकी ये जो सपोर्ट दिख रहा है या ये जो सपोर्ट दिख रहा है या फिर ये जो कल जो सपोर्ट लिया ये सब ऑटोमेटिक है। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो 24 ऑफ जुलाई को जो सपोर्ट लिया था वो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे लिया था। फिर जो 19 अगस्त को जो सपोर्ट लिया वो ट्रेंड लाइन के नज़दीक ही था। कल भी जो हमने सपोर्ट लिया वो ट्रेंड लाइन के नज़दीक था। तो ये था हमारा चार्ट। अब इस चार्ट को मैंने लॉग चार्ट कर दिया है। दो टाइप के चार्ट होते हैं, एक नॉर्मल चार्ट और एक लॉग चार्ट। अब जब मैंने लॉग चार्ट मैंने कर दिया है सेम ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि बाजू से घुमा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे आपने सपोर्ट लिया। कल का भी आपने देखेंगे तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे देखो चार्ट का ऑप्शन है लॉग और नॉर्मल करने के लिए। तो जब जैसे ही मैंने लॉक किया तो आप देखो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए हैं और जैसे ही मैंने लॉक को हटा दिया तो ट्रेंड लाइन्स कनेक्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओ तो एक बार लॉग और नॉर्मल चेक कर लिया जाए और फिर आप उसके निष्कर्ष पे आइए कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था या नहीं लिया था। तो अगेन नाउ वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर एंड वी आर नाउ एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। सो दिस line connected with this, it has given a false breakout but took a resistance near the 200 day SMA and then again went into the structure. So now when I am doing a normal chart, I have connected this low of 2nd of April to 11th of July and then these are the automatic lines going further. When we see on a normal chart, so we see the Nifty has taken support near the lower band of the trend line of on 24th of July 2026. But when we see this candle, so this doesn't seems to be like it has been short of that trend line on 19th of August and then it went and gave some kind of a pullback. Again yesterday we have seen it was near the trend line and then we got a bounce. But when we see a chart in a log style, you can see in a log chart it touches the trend line and then get a bounce. It touches the trend line then bounce. If I am removing that log, then you are seeing it was short of the trend line. So check both when you are using a trend line so that it will help you to adjust the trend lines. It will be automatic according to the chart. So as per the log chart, it has taken a support near the trend lines both the times. So after connecting these two dots, so 1, 2 and third, so 3 times we have taken a support near this trend line. What exactly it means? On the upside, this trend line was only retested and closed one time and then again it went back and never retested again.
But on the downside, it retested 1, 2 and 3 times. So the demand has eroded from this trend line, and if we are closing now below this trend line, so we have a chance the height of this. Now I am shifting this to yesterday's low. If yesterday's low is broken, then the height, this is the height of the triangle, which is I am right now measuring from here. Then we can go further downside, and this downside we have to adjust it. So it is 2419 points. I'm using an approximation. Target comes around 21,700 levels. So we have to be very cautious in market. This exactly means if we are breaking yesterday's low of 24,115, then there is a deeper correction going to happen if it is going to achieve this height. So this is just a projection. It will come or not. That market is supreme. So market will tell. But yes, we have to be very cautious right now in the market because of the technical setup. Plus the moving average is showing the resistance level and the trend is also down. I will show you when the trend will be the up. So when your brown is above, the brown is 10-day EMS. The first will be 10-day EMA, then second will be 20-day, 50-day, 100-day, 200-day EMA, and then 200-day SMA. When the structure is like this, your trend is up. So all the corrections in the uptrend has been absorbed near to some of the moving averages. So here 100-day moving average got support, 100 moving average, 100 moving average. It went up, then 10-day and 20-day EMS went up. 50-day EMA went up, again 10 and 20-day EMA went up, 50-day went up, 50-day went up, 10, 20 went up. But as soon as the structure has changed, after this you can see the jumble has started, then the trend has changed, and then you can see a big fall came. So it has already alerted you. Once it has closed below the 200-day SMA, the trend was down. This was just a bounce, and then after that bounce, again when it broke and closed below the 200-day SMA, it went down. So similar structure right now, you can see the trend is already down. Only thing is the structure is not supporting the trend. If it is closing below yesterday's low, which is 24,115, we can see some kind of a bigger momentum downside. We have to be very cautious. Without stop loss do not work in markets. So right now the bias is negative. Now we will go towards the bank nifty. In bank nifty there is a structure. We have already shown you last time as well. 25th of June the high was 58,706. 24th of July the low was 56,023. So round figure 56,000. Here the round figure is 58,710. So till the time it is not closing above 58,710 or below 56,000, the trend is sideways. You can see it is very choppy. So we have to be very cautious. It is neither outperforming, neither underperforming, going sideways and giving a very volatile movement. So till the time this range is not broken, anything or any price action within this range is very irrelevant. Currently the trend has not changed. It is trying to change the trend from down to up, but still because the structure is not supporting, the trend has not yet changed, so the trend is sideways. We need to understand that. Now we will go to the analysis of stock specific. This is the first stock, which is a heavyweight stock of Nifty and Bank Nifty both. So basically what you are seeing, 200-day SMA is above, 200-day EMA is above,
then 100, then 50, then 10, 20, and then 10. So, and the prices are trading below the 10-day moving averages. So you can see the trend is down. Structure, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. The structure is also weak. Momentum is on the downside, red candle. So first analysis of the stock, the outcome or the verdict is the trend, structure and momentum of HDFC Bank is down, negative and weak. सो पहला स्टॉक हमने जो लिया ये हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और जब भी हम लोग ये जब स्टॉक चेक करते हैं तो जैसे ट्रेंड एनालिसिस हम लोग करते हैं तो इसमें 200 डे मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है जो SMA है, 200 डे EM है उसके नीचे आपका 100 डे मूविंग एवरेज है, फिर 50 है, फिर 20 और फिर 10 और उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है ट्रेंड डाउन है। मोमेंटम आप देखेंगे तो एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर भी खराब है और जो बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है। प्लस मोमेंटम आप जब देखेंगे तो कैंडल्स ग्रीन कैंडल नहीं बन के रेड कैंडल है, मतलब मोमेंटम भी डाउन है या वीक है। सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रेंड, स्ट्रक्चर और मोमेंटम ये तीनों जो है ये HDFC बैंक के केस में डाउन है। सो अगर HDFC बैंक का जो वेटेज है वो हैवी है तो निफ्टी तो ऊपर नहीं जा सकता है। सेकंड स्टॉक जो है जो हैवी वेट कैटेगरी में आता है वो ICICI बैंक है। तो हम ICICI बैंक देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे ICICI बैंक ने आज क्या किया है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ट्रेंड लाइन पे ही आज रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ लिया हुआ है। अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है। अगर ब्रेकआउट देके अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो फिर ICICI बैंक जो है वो एक अच्छा मोमेंटम में निकल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा। बट जब तक ये इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता और फॉलो अप बाइंग नहीं आती है तब तक तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा। अब जब ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50, 100, 200 और 200 डे SMA किस तरीके से है, मतलब एक प्रॉपर लाइन है, ये अप ट्रेंड की निशानी है। तो ये अप ट्रेंड में ही है। अगर मैं आज की बात करूँ तो मोमेंटम भी आज तेज में है, अप मोमेंटम है। सो मतलब 3 में से जो हमारे 2 क्राइटेरियाज है वो मीट कर रहे हैं ICICI बैंक में, इसलिए आपने देखा होगा कि आज अच्छा मोमेंटम है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि लिए ICICI बैंक सपोर्ट कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी को और ये सेकंड हैवी वेट स्टॉक है। खाली क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये कल आज इस तरीके से क्लोज होता है इसके ऊपर और अगर कल आज के हाई के ऊपर निकल जाता है तो उसको बोलेंगे फॉलो अप बाइंग, तो स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो ICICI बैंक currently the structure is weak because it has not yet closed above the trend line. Right now, if it is closing like this also, it will be known as it has taken a resistance near the up falling trend line. So the trend is up because the 10-day and 20-day moving averages are above. Then you can see below it there is a 50-day moving average, orange line, then 100-day, 200-day EMA and then 200 SMA. So this is a classic uptrend basically. Even the momentum today is like up only. So momentum is up, trend is up. Only thing is structure. So we are waiting for the structure. If it is closing above this falling trend line, then the structure will be also good and we need a follow up buying. In that case, it will support or continue to support Nifty and Bank Nifty. The third stock is Reliance, which is the third best heavyweight stock. Now, as soon as you see this structure, wherein the long-term trend of Reliance is down, but right now the short-term trend, you can see it is very choppy. Why? Because your brown line, you can see over here, the brown line is above 50, which is 10-day EMA, then 50-day, then 20-day. It is very jumbled right now, you can see. So currently, even Reliance doesn't know the short-term trend is where to go, up or down. Overall bias is negative. Why? Because the long-term trend is down. You can see over here on 7th of August, it has taken a resistance near the 100-day EMA, and then after that, it is trading
near these short-term moving averages only. So after getting a resistance from there, it is right now consolidating near these levels. This can go or break out, but still the trend will be down. We have to be very cautious. If it is breaking on the downside, then it will not support the Nifty. Today's candle, you can see right now it is trading 0.5% down, which is the momentum is weak or the momentum is down. Structure is also weak and the trend is also down. So only the short term trend is sideways, long term trend is down. So avoid Reliance. ये रिलायंस का चार्ट है, डेली मूविंग एवरेज जो मैं बता रहा हूँ ये डेली का चार्ट है, एक एक कैंडल एक दिन का चार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो डाउन है, क्योंकि ले सबसे ऊपर जो है आपका 200 डे SM है, फिर EM है, फिर आपका 100 डे, और अभी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो साइडवेज है। तो ट्रेंड तो क्लियर कट डाउन है, स्ट्रक्चर भी वीक है, यू कैन सी कि वो लोअर है, लोअर लो बना रहा है, और अभी फिलहाल जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है वो साइडवेज है। ठीक है, अब आज का देखेंगे तो मोमेंटम भी आज का डाउन है, 0.5% डाउन है। सो वर्डिक्ट ये निकल रहा है कि फिलहाल निफ्टी को रिलायंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने 3 स्टॉक देखे, 3 में से सिर्फ ICICI बैंक जो है आज सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को, HDFC बैंक और रिलायंस ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड जो स्टॉक है हमारा वो है भारती एयरटेल, उसके बाद है LNT। तो भारती एयरटेल हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर बहुत ही चॉपी है। देखो ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड अगेन जंबल्ड अप है ना, बट आपका जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है यहाँ पे 200 डे SM है और 200 डे EM है, दोनों के बीच में काम कर रहा है। तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है, स्ट्रक्चर नेगेटिव, ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव, और आज का जो मोमेंटम है भारतीय एयरटेल -1.42% है, मतलब वीक मोमेंटम है, और अभी फिलहाल ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। सो आपके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है और जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे काम कर रहा है, खाली 100 डे और 200 डे EMA के ऊपर काम कर रहा है। तो इसी के लिए जो बहुत बड़ा मूवमेंट अपसाइड भी नहीं आ रहा है और बहुत बड़ा मूवमेंट डाउनसाइड भी नहीं आ रहा है, बट जैसे ही ये वाला जो लो है जो है आपका 1900 का सपोर्ट, तो ये स्ट्रक्चर के जैसे ही नीचे चले जाएगा स्टॉक 1900 के नीचे और इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, तो आपका सारे मूविंग एवरेज इसके नीचे क्लोज हो जाएगा प्राइस, और फिर स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी वीक है, आपका लोअर है, लोअर लो बन जाएगा और ये कंटिन्यू होगा डाउन साइड के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि ये चौथा स्टॉक है जो निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है और नेगेटिव भी है। दिस इज द चार्ट ऑफ भारती एयरटेल। As per the structure is weak. As per the trend is down to sideways, and the momentum currently you can see it is weak because it is trading negative by 1.57%. Next stock is LNT. So currently you can see LNT is trading above all the moving averages. Only thing is right now the structure of the trend has not yet been fully changed from down to up. It is trying to change. Why? Because yet we are not aligned. Only thing is short term trend is up because 10 day, 20 day and 50 day and 100 day are aligned. But from a long term perspective, the trend yet has not changed. So from that point of view, overall I have already maintained this. So this is the very bigger structure from a long term point of view. 4440 was the high made on 24th of February, and on 23rd of March it made a low of 3288. So within this bigger structure it is, you can see, making a very choppy trend. The moving averages has trying to change but not yet completely changed. Many a times it has tried but again gone down because the broader structure is sideways, and in a broader structure when the prices are stuck between these bigger structure, price can go wherever price is not getting any kind of a breakout or breakdown. So we need to be very cautious.
Sometimes it will support, sometimes it will go down. So I'll just show you about from the percentage point of view. From here to here, this percentage movement was 10.84%, which is a very good percentage move. But then you can see what happened. From this high to this low, it went more down. It was almost 13% down. Again from this structural low till yesterday's high, we went 10.90% down. Now we haven't crossed this high, intermediate highs or intermediate lows. So in a bigger structure, we are into very small structure and stuck between these two. So 4272 and 3720. This is the medium term trend analysis. From a short term point of view, the trend is up. So till the time it is trading this above this trend line, the short term structure is up. But today it is trading down by 1%. So momentum is weak. So it is not supporting Nifty. So the verdict is the top 5 stock only ICICI Bank is supporting. Other 4 stocks are not supporting Nifty. So our analysis for Nifty or bias is right now down only. The second stock now from a 6th onwards is SBI, Infosys, Axis Bank, Bajaj Finance and Mahindra. So now these 5 stocks have remained. We will go very fast because I have already explained how we are doing the analysis. So SBI you can see structural, yes, but still the 200-day SMA is jumbled near the 100-day EMS. So right now it is into a process to change the trend. The long-term trend has not yet changed from down to up. Overall you can see. In a bigger structure, it is trading near these highs 1121. So the structure of SBI Bank is sideways from a long term to medium term point of view. Short term you can see as it is trading above the moving averages, the short term structure or the short term trend is up. It has taken yesterday or last 2 days the support at 100-day and 200-day SMA and 100-day EMS. It has engulfed, you can see this is the bullish engulfing candlestick pattern, and right now it has given a follow-up buying. But today what happened, as soon as it has touched 1062, it has received some kind of a profit booking, and right now it is trading near 1055. Still it is trading above the 10-day moving average, which is currently at 105253 levels. 20-day EMA 1052. So if it is closing below 1052, then short-term moving average is closing below the price, then that there will be like momentum will be weak again, and the trend for a short-term point of view will be down. So right now it is not into a very good state, but still supporting Nifty Bank Nifty because right now the momentum is up. Still, the structure is not that much good so that we can take a trade or buy it. Plus it is not into a that much state key it will support a Nifty or Bank Nifty because this is the 6th largest. The top 5, only in top 5 ICICI is supporting, and then this is the weightage is 6th weightage. So right now it is up by 0.71%. It is contributing towards Nifty but not that much. तो SBI का ट्रेंड जो है वो है फिलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, डाउन टू साइडवेज है अभी भी, है ना. बट बायस देखेंगे तो अभी भी बायस जो है वो पॉजिटिव बायस है, अब है. स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, देखो यहाँ पे लोअर है, लोअर लो ही बन रहा है. सो खाली यहाँ पे कल जो हुआ है, क्या हुआ है 2 दिन में आपका जो 100-डे और 200-डे SMA है वहाँ पे सपोर्ट लिया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और आज फॉलो अप आएंगे.
तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक छोटा सा ट्रेड बनता है, वो भी आज देखेंगे तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया 1062 के लेवल से। सो अभी 1055 ट्रेड करा, अगर ये 105253 के नीचे 52 के नीचे क्लोज हो जाता तो आपके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10 डे मूविंग एवरेज है और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम वीक हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये आज सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को, बट उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और ये सिक्स्थ हैवी वेट है, तो इतना बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, सिक्स्थ लास्ट है ना, इसीलिए। इसके बाद में इन्फोसिस, जिसका तो ट्रेंड भयंकर डाउन है। जैसे ही हम लोग इन्फी का चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फोसिस का जो ट्रेंड है, ये देखो, यहाँ से देखेंगे डाउन है, यहाँ से देखेंगे तो डाउन है, यहाँ पे देखो लोअर है, लोअर लो, ट्राई कर रहा था चेंज करने को बीच में, है ना, नहीं हुआ, फिर डाउन है, और अभी आप देखो हम कितना नीचे है। आज आप भी देख रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो डाउन है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जंबल कर रहे थे, ऊपर ट्राई कर रहा था चेंज करने का, अगेन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके नीचे अभी आपका जो इन्फोसिस का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है, और आज का मोमेंटम वीक है। तो ये सेवंथ लार्जेस्ट हैवी वेट स्टॉक है जो निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिवली सपोर्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है। Again, this is a chart of Infosys. Trend is down, structure is down, momentum is down. All the three is down. The verdict is it is not supporting Nifty. Then Axis Bank, which is the eighth largest in terms of the weightage. Momentum up. Short-term moving average is trading. So short-term trend up. Long-term average is it is trading below. So long-term trend is down. So what the verdict is? Long-term trend line trend is down, short-term trend is up, momentum is up. Today it is supporting Nifty. If it can go up tomorrow as well, still the momentum will be up, but the trend from a long-term point of view will be down. So short-term traders will book profits near the long-term averages, and then again it can come down. So today it is supporting. So ICICI Bank and Axis Bank is supporting, but rest all the 6 stocks are not supporting Nifty. तो एक्सिस बैंक का जो मोमेंटम है वो अप है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो आपका शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो भी अप है, बट लॉन्ग टर्म सारे ट्रेंड डाउन है, स्ट्रक्चर भी वीक है। तो स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट खाली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आज सपोर्ट है। ठीक है, तो वो क्या है, वो तो कल या आज ही प्रॉफिट बुक करके साइडवेज हो सकते हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से तो ट्रेंड अप है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो 9th और 10th स्टॉक है, ये आपका बजाज फाइनेंस और एम है। इनका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। सो बजाज फाइनेंस आप करंटली देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है फिलहाल वीक स्ट्रक्चर है, बट सारे मूविंग एवरेजेस के ऑलमोस्ट हम लोग जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो अप है ना, बट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है या साइडवेज ट्रेड करे, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस साइडवेज है। तो ये और एक गैप भी है यहाँ पे, तो ये गैप फिल करने में कुछ शायद जा सकते हैं ऊपर में। तो आज अब देखेंगे तो ये फ्लैट टू नेगेटिव काम कर रहा है, तो आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसमें भी, तो ये आज भी सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इट इज नॉट सपोर्टिंग, बिकॉज ओवरऑल लॉन्ग टर्म बट ट्रेंड फॉर बजाज फाइनेंस इज अप ओनली, but structure is weak and the momentum is also weak. So structure momentum not supporting Bajaj Finance, only long term averages are, it is trading above long term averages, so long term trend is up but short term trend is down, so it is not supporting Nifty. The last one is Mahindra and Mahindra M&M. So currently you can see it is into a very jumble state, it is trying to change the trend from down to up. Currently structure you can see it is making higher and higher lows, but the current structure is sideways to down, and you can see this is the range. So below 3371 it can go down, above 3535, okay, it will go up. So right now it is into a very sideways structure, sideways to
down momentum. Today it is 0.5% down. It is not supporting Nifty. सो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आज ये आधा टका नीचे है ऑलमोस्ट, तो निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका जो मोमेंटम है वो वीक है, स्ट्रक्चर भी खराब है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है। और खाली लॉन्ग टर्म जो एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, बट अभी भी यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है ट्राई कर रहा है ट्रेंड चेंज करने के लिए, अभी ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है। सो ट्रेंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और मोमेंटम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका निफ्टी कहाँ जाएगा? तो निफ्टी फिलहाल तो डाउन ही है। तो हमारा एनालिसिस हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप अपने चैट में पूछ सकते हो। अगर कोई नहीं है क्वेश्चंस, तो हम लोग आज के जो सेशन है उसको कंक्लूड कर देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन द चैट नेम ऑफ द स्टॉक और एनी काइंड ऑफ इंडेक्स इफ यू वांट टू चेक, वी विल डू द एनालिसिस। इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस वी विल कंक्लूड द सेशन। या श्रेयस। थैंक यू वेरी मच।